Checking the connection. I think I am live. Just wait for few guys to join me. Hello, 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 hello. Hi, hi. Hello. Hi guys, I am Chef Ananya Banerjee. It's 11 o'clock in the night. It's going to be midnight now. बहुत जोर से भूख लगी है. What about you guys? डिनर तो कब का हो चुका है. What do you do at this time? Normally, I open my Netflix and I just binge watch Netflix. Mostly cooking shows. What do you guys do? And Netflix करते करते you feel like munching something. वो main course नहीं हो सकता है. It can't be roti sabzi dal chawal, nothing like that. You feel like munching something. So midnight snacking के लिए I am doing today cheesy chili garlic potato bites. How does that sound? Hi everybody, hi. So I'll do this recipe and after that I'll take your comments. Done? Good. So first of all, let me thank you Amul for giving me this platform, and thanks very much. This is 3 times in a row, but first time I'm doing this midnight snacking demo. Thank you Amul. It's a great platform to be in. So in this recipe I'll be using Amul cheese. Sabka favorite hai. I've grown up with this cheese. My first experience of cheese in my life is this. And that time we used to get those little cubes, and I used to just love eating them. I still do. So this is, let me open the wrapper. I'll be using Amul cheese. छोटा छोटा क्यूब्स में काट लेते हैं इसको. So चीज़ी चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स है, तो चीज़ी बनाने के लिए चीज़ यूज़ कर रही हूँ. तो इतना ही चाहिए. एंड सो चीज़ को मैंने ऐसे ऐसे स्लाइसेस में, स्ट्रिप्स में काट के रखा है. ठीक है, इसको और थोड़ा छोटा बना देते हैं क्योंकि बाइट साइज होना चाहिए. सो आई थिंक आई विल डू दिस साइज. कीप इट असाइड. अभी चिली चीज गार्लिक पोटैटो में चीज का पार्ट हो गया. अभी चाहिए पोटैटोज. आई हैव बॉइल्ड सम पोटैटोज. आई एम जस्ट गोइंग टू, उबला हुआ आलू ले रही हूँ मैं, और आलू को ग्रेट कर रही हूँ सो दैट इट मिक्सेस फास्ट. और कोई रीज़न नहीं है. ग्रेट कर रही हूँ आलू को सो दैट एकदम जल्दी जल्दी वो इवनली मिक्स हो जाए. सो ग्रेट. So, and guys, I would love to chat with you once I am done with the cooking demo. Then I can have a closer look at all your chats and then we can chat. Yeah. So मेरा आलू ग्रेट हो चुका है. See, my आलू is nicely grated. ये इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गार्लिक, मिंस्ड गार्लिक. चिली चीज़ी गार्लिक ही है ना, सो गार्लिक डाल दिया. थोड़ा सा हरी मिर्च आई एम पुटिंग इन द आलू, ग्रेटेड आलू, सो इट बिकम्स नाइस एंड तीखा. सम धनिया पत्ता दैट आई एम एडिंग. इसको और थोड़ा चिली बनाने के लिए चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ. सो चिली फ्लेक्स भी डाल दिया और इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स. आई हैव टू पुट सम सॉल्ट टू टेस्ट.
के लिए आई एम यूजिंग दिस हिमालयन पिंक सॉल्ट. यू कैन यूज योर रेगुलर सॉल्ट, डजेंट मैटर. सो दिस सॉल्ट टू टेस्ट. और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो जैसे बिकम्स अ स्मूथ आलू पेस्ट काइंड. अभी आलू हो गया मिक्स. यू हैव टू ऐड सम बाइंडिंग. बाइंडिंग के लिए आई एम यूजिंग सम कॉर्नफ्लावर. सो दैट ये आलू में मैं जब इसको कटलेट के फॉर्म करूँ उसका अच्छी तरह से ये फटे नहीं. इट शुड हैव अ नाइस बाइंडिंग. और थोड़ा बाइंडिंग के लिए आई एम मिक्सिंग सम ब्रेड क्रम्स. आप रेगुलर ब्रेड क्रम्स, ये ब्राउन वाला आपके पास है पेंट्री में तो यूज़ करो, नहीं तो यू कैन यूज़ नॉर्मल ब्रेड स्लाइसेस. उसको भी आप इसमें मिक्स कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव ब्रेड क्रम्स रेडी. सो कॉर्नफ्लावर गया और ब्रेड क्रम्स गया. सो द आलू इज़ नाउ सिक्योर्ड. होपफुली इट वोंट come out when I fry in oil. Yeah. So इसको अच्छी तरह से मिला देना है पहले. It's now mixed very well. When it's mixed well, I'm keeping it aside and I'm making a मैदा का एक घोल बना रही हूँ. I'll take some maida. Mix some water in the maida and make a slurry. Add little salt to taste. And make a slurry from the maida. Add little more water so that the consistency is right. So even if you are not hungry, ये सब आप ताम झाम करो तो हंगर तो आ ही जाएगा एंड मिडनाइट का स्नैकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा. So now the slurry is also ready. What I'll do is, ये जो आलू है, आलू का मैं छोटा छोटा पोर्शन आउट कर लूँगी. आलू को पोर्शन आउट कर लेंगे. आपको कितना खाना है? चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स मुझे 3 या 4. सो एनीवे आई एम मेकिंग 6. सो जब तक मैं आलू गरम ये फॉर्म कर रही हूँ, इधर से मैं गैस को भी ऑन कर देती हूँ क्योंकि मुझे डीप फ्राई करना है और ऑयल को एकदम हॉट होना चाहिए. सो लेट द ऑयल हीट अप दिस साइड एंड दिस आई एम मेकिंग दिस पोर्शंस. 4 बनाते हैं, ये बाकी का बाद में दिखा जाएगा. सो टेक 1 portion of it, flatten like this, just flatten. Put a cheese slice, cheese cube, whatever you have done, and close this like this so that आलू के अंदर में चीज़ का स्टफिंग चला गया. एंड इसको ऐसे स्क्वेरिश टाइप का शेप दे दीजिए. ठीक है, ओके. सो बाकी का आलू भी सेम इस तरह से बना लेना है. चीज स्टफिंग इनसाइड, क्लोज इट फ्रॉम ऑल साइड्स एंड मेक अनदर वन. एक्चुअली मिडनाइट स्नैकिंग, व्हेन यू से मिडनाइट स्नैकिंग, वो जो होता है, यू फील लाइक हैविंग समथिंग चटपटा, समथिंग सिंफुल, नॉट द रेगुलर हेल्दी स्टफ. हेल्दी आपको चाहिए तो आप बिल्कुल हेल्दी खा सकते हो, ऐसे कुछ नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. सो मुझे ये टाइम पे तो बिल्कुल हेल्दी नहीं खाना है. सॉरी. ओके. So another one.
सेम वे में आप करो। आपको इसके अंदर कुछ भी भर सकते हो, और ये आलू में भी आप फिलिंग, जब मसाला बना रहे हो आलू का, you can add anything of your choice, like you can add your Indian spices also, in the sense you can add धनिया, जीरा, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। I have given it a little with chili flakes and garlic, because this combination मुझे बहुत अच्छा लगता है। So the last one, भर दिया चीज इसमें, और just show you how it looks. One second, the last one, let me form this. ये देखो, ऐसे अभी इसको फॉर्म करके रखा है, और इधर मेरा मैदा स्लरी भी रेडी है। ओके, सो मैदा स्लरी है रेडी, ये फॉर्म करके रेडी है। अभी मैं थोड़ा सा इसमें ब्रेड क्रम्स लगाने वाली हूँ। सो मेरे पास है एक पैनको ब्रेड क्रम्स, ये जापानीज ब्रेड क्रम्स होता है, ये थोड़ा सा थिकिश टेक्सचर, विच आई लाइक इट वेरी मच। नहीं है तो बिल्कुल मत घबराइए, आप नॉर्मल ब्रेड क्रम्स यूज़ कीजिए। सो मैं एक बेड बना रही हूँ ब्रेड क्रम्स का और पैनको ब्रेड क्रम्स का, दोनों मिक्स करके। ओके, सो आई एम जस्ट फॉर्मिंग अ लिटिल बेड ऑफ ब्रेड क्रम्स ओवर हियर। सो एक आलू का ये टिक्की जिसमें चीज़ भरा हुआ है, अमूल चीज़, उसको मैं मैदा का स्लरी में डिप कर रही हूँ। सो आई एम डिपिंग इट इन मैदा स्लरी and putting it in the breadcrumbs. Okay, same method, follow this same method, slurry में dip करो और breadcrumbs के ऊपर, so that it is coated with breadcrumbs. Yeah, so जब ये कटलेट या चिली गार्लिक, चीज़ी चिली गार्लिक बाइट्स रेडी होगा, ऑयल में फ्राई होके एकदम करारा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। नाउ द लास्ट वन, या इसके ऊपर और थोड़ा ब्रेड क्रम्स। ये गीला हाथ से कभी ब्रेड क्रम्स के टाइम डोंट टच इट, ट्राई एंड यूज अ स्पून टू मूव, or so that, sorry, I think there was a network problem, I hope you have not missed anything. So ऐसे करके आप ये चिली गार्लिक बाइट्स को रेडी कर लो, मैदा के स्लरी में डुबा के, फिर इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करके। ओके, now it's almost getting ready. पैनको ब्रेड क्रम्स का एक खासियत है, it's little thick and the texture is very crisp. When you fry it with help of panko, the texture is really crisp and I really like that texture. तो आपका ये हो गया रेडी, बाकी दो है, ये चारों चार तो मैं खाने वाली नहीं हूँ, फिर भी बना लेते हैं चार। How many are you going to eat? If you are making this, let me know. Okay, that other one and the last and final one. Okay. Yeah, thank you for watching me today. Thanks so much for joining us for this live. It's fun cooking for you. Yeah, so मेरा
चिली गार्लिक बाइट्स में ब्रेड क्रम्स तो लग गया. अभी आई एम गोइंग टू डीप फ्राई. जस्ट जगह थोड़ा क्लीन कर लेते हैं. यू हैव टू ऑलवेज यूज अ क्लीन सरफेस. या नाउ लेट मी पुल द ऑयल अ लिटिल दिस साइड so that you can see what I'm doing. So इसको थोड़ा सा कम करते हैं. इसका फ्लेम बहुत ज़्यादा है. Yeah. I'll get a tissue roll. And I'll get a plate to drain out the fries. My oil is nice and hot now. इसको और थोड़ा कम करते हैं. And ये बेस्ट है. आप अगर बना रहे हो तो इसको थोड़ा रेस्ट दे दो फ्रिज में. Keep it in the fridge for 15 minutes so it firms up even more and then fry. But अभी मैं लाइव कर रही हूँ. मैं रेस्ट करने का टाइम नहीं है. I'm just dipping it in oil now. ये बर्न हो गया ज़्यादा. Okay. Just deep fry these so that बाहर से तो सब कुछ पका हुआ है. You just have to give color from the outside. That's it. So it's done very fast. Just close the gas. And I will show you how it looks from inside. Okay. This is the moment of truth. बहुत गर्म है तो. So my chili garlic bites are ready. I just cut one open to show you. Yo, see the cheese inside, and it's stuffed with potatoes and chili. And तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, एक प्लेट चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स लूँगी, थोड़ा सा केचप. I'll sit in front of my TV and Netflix. So this was my midnight binge, midnight snacking option. आप भी इसको बनाइए और मुझे बताइए कैसे लगा. So let me chat with you a little bit because now the cooking part is over and I can chat with you. Hello everybody. So it was great to be on live at Amul platform with you guys. If you have any questions to me, you can surely ask. I am ready to answer. Yeah, the oil was very hot because I thought sorry. No, it's not burned. If you just see the every piece, I can hold it and show it to you. It's not burned. This is not burnt. By the way, this is not burnt. If you see. Oh my God, it's burnt. Do you think it's burnt from any angle, any side? Really? It's nice to discuss on food and nice to have positive criticism. But something which is not true, it's not good to say. Yeah, surely try it and let me know. It was great fun being on live with you in this platform.
and interact with all of you. Fantastic. So I used, yes, I used Amul cheese. This is the cheese packet I'm showing you. This is the one. I used this, a normal cheddar cheese. So you can make breadcrumbs. You can just take out the edge, take bread slices, chop off the edges, don't use the brown part. The inside you can just put it in the mixie, and you can use fresh breadcrumbs like that. And you can also toast the bread and then grind it in a mixie and make this brown breadcrumbs. Both are good for this recipe at least. If you don't cover the bread, if we don't cover it with bread, okay, if you don't cover it with breadcrumbs, yes, you can increase the amount of corn flour and maida in it a little bit more. It should also form, but the texture won't be like this. It will be little, how do I say, it will be little maida coated texture. So that is not exactly the same as when you use breadcrumbs. That's the difference. You want the recipe. Okay, so what I'll do is later on I will just post the recipe in details recipe. Surely I'll do that. It's very delicious and hungry. Me too. That's what I said, that now I'm going to Netflix and eat my chili garlic potato bites. If you want to eat it, please make it and eat. Can you use egg wash instead? Of course you can, but since it's a vegetarian recipe, I gave you a vegetarian option. But normally when you crumb fry anything, say fish or chicken or anything, egg white is the best binder. Egg is the best binder. First dip it in egg and then in breadcrumbs. That texture is even better. But this platform prefers vegetarian recipes, so I stuck to vegetarian recipe. Can you freeze and use it later? If yes, well, aloo, if you see, potatoes don't freeze, but if you are crumbing like this, so the potato filling inside, it freezes very well. So you can freeze and just flash fry when you you don't even, yeah, you have to thaw it a little bit and then fry it when you're having it. या चीज़ मेल्ट नहीं होता है क्या अंदर से? सो नॉर्मली दिस अमूल चीज़, it's a cheddar cheese, it's a hard cheese. So if you have to melt it, you have to fry it for a little more, maybe slow fire it, slow cook it for a little more time. If it was mozzarella cheese, it would have melted very fast. But just this flash frying what I did, उसमें भी चीज़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता था अगर ये मोज़रेला होता. So cheddar takes a little more time. That's why. If you can use an air fryer, I think it'll wonderfully be well. But if you are used to air fryer taste, like a lot of people have told me that air fryer doesn't give you exactly that fried taste, but I like it because it's so much healthier. So try it. But when you are using air fryer, one tip I'll give you, coat it with little oil or brush it with little oil and then put it in the air fryer. Just don't put it just like that. So that little bit of oil will make all the difference in the air fryer. So you're saying, Devi Jani, I live in Chicago and don't get Amul cheese here. You recommend, of course, mozzarella will work wonderfully well and it will melt also, melt faster, I mean. So, but Amul cheese, since what I said in the beginning of the live, that, you know, we Indians, we have grown up with this taste. So like this is the first cheese I ever had, ever tasted in my life. Later on, I've tasted cheese from all across the globe, but this is the first cheese memory for me. So I'm using that. Ma'am, can you use, yeah, if you want to make it, say, Jain version, of course you can. Don't use garlic, use raw banana patties, that kind, and use cheese inside. That'll, I think, be a nice twist. In fact, if you make it, do let me know. I'm curious. I'd love to know. Yeah. Can you use paneer? Yes, of course. If you don't eat cheese, you can use paneer.
But paneer has a different texture and a mouthfeel. It's not like cheese. So, not like processed cheese. I mean, paneer is also a kind of cheese, cottage cheese. But yeah, you can. But paneer won't melt, definitely. But it'll be soft and melty in the mouth. Most welcome. So any more questions, guys? It was great fun connecting with all of you and talking about this midnight binge. It's going to be 12 very soon. So thank you, thank you, thank you, guys. Thank you. So many somebody, can it be done in less oil, shallow fry it? Yes, you can, definitely you can try using less oil. Anything else I missed out? Lovely recipes, thank you. Yeah, the temperature of the oil was a little too hot because I thought while I am chatting with you and finishing this part, it became a little too hot. But yeah, when you are at home and you're cooking, of course you have your focus there. I'm sure you're going to do a better job. Recap. Okay, recap is fine. So what I did is I've taken some boiled potatoes which I grated in a grater because I wanted a smooth finish. In that I added some chili flakes, some garlic minced, some coriander leaves, some green chilies and some salt. Mixed it very well, added a bit of corn flour and some maida for binding, kept it aside. I made cheese slices, cheese cubes rather, and I've stuffed that aloo mixture. I've stuffed the cheese inside the aloo mixture and made it this shape. Okay, I made some maida slurry, which maida, salt and water. I made a slurry out of it, dipped the aloo tikkis inside that slurry, coated it with breadcrumbs. I used both panko breadcrumbs and normal breadcrumbs and deep fried in oil. I think I didn't miss out anything. So guys, thank you. I appreciate your comments. Sangeeta, thank you. Do I have any recipe videos? Yes, you can check out Chef Ananya Banerjee. I have a dedicated YouTube channel where I upload all my videos there. So do check it out and do subscribe. Thank you. Thank you so much. And all of you, take care of yourself, stay safe, stay good, and thank you. Good night. Happy binging. Bye.